Is it visible? Yes. हाँ, yes. Yes, So friends, visible. Yes, sir. सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर cevnews.in, cevnews.in यहाँ पर टाइप करना है आपने cevnews.in और cevIndia.org, cevIndia.org और cevnews.in. हम लोग CV News से कंटिन्यू करेंगे टू स्पेयर सम टाइम. इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए ये होम पेज के ऊपर मेन्यू बार नजर आ रहा है. ओके, यहाँ पर एक ई लाइब्रेरी का बटन आपके लिए जरूरी है, ई एकेडमी का बटन जरूरी है. देन इसके अलावा फॉर्म्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं. विजिट CVIF, यहाँ पर अगर आप CVIF की वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, इसको क्लिक करिए. CVIF के प्लेटफॉर्म पे हम लोग यहाँ पर अभी मिल रहे हैं. आप दोनों साइट हमारी इंटरलिंक्ड हैं, और भी काफी सारी साइट्स हैं, सब इंटरलिंक्ड है. आप किसी भी साइट से कहीं भी जा सकते हैं. दिस इज CVIF. CVIF पे पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर अबाउट है. अबाउट में सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं. अभी आपके लिए जरूरी जो मेन है वहां पर हम लोग बात करेंगे सिलेबस. ये देखिए रेगुलेशंस के अंदर सिलेबस, ये यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है सिलेबस. इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 1 अप्रैल 2019, 31 दिसंबर 2018, सबसे पहला जो एग्जामिनेशन शुरू हुआ था 31 दिसंबर 2018. ओके, उसके बाद में 1 अप्रैल 2019 को रिवाइज किया गया सिलेबस. देन 1 जून 2020 ऑनवर्ड्स आज तक ये चल रहा है एज ऑन डेट. 31 मार्च के बाद सिलेबस बदलने का चांस है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है. लेकिन ऐसा सुनने में आया है क्योंकि हमसे सिलेबस के बारे में जो रिकमेंडेशन थी RBO की वो ले ली गई है. हो सकता है 31 मार्च के बाद बदल जाए. अभी तक लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में हमारे पास नहीं है. तो आपको सिर्फ यही क्लिक करना, 1 जून 2020 ऑनवर्ड्स आपको ये क्लिक करना है. इनकेस न्यू सिलेबस आएगा तो यहाँ पर नया सिलेबस ऑटोमेटिक अपने आप अपलोड हो जाएगा. इसको डबल क्लिक करेंगे. देन ये आपको तीनों एसेट क्लास का सिलेबस है. आप अपने रेस्पेक्टिव एसेट क्लास का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. दूसरे की तरफ जाने का जरूरत नहीं है. LNB मींस लैंड एंड बिल्डिंग, सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स यहाँ पर जाएंगे. PNM प्लांट एंड मशीनरी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड अलाइड ब्रांचेस के जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो यहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं. अपना सिलेबस डाउनलोड करिए, इसको एक अपना परमानेंट अपने पास स्टोर कर लीजिए. अब मैं वापस आता हूं. मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूं कि आप कैसे साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेटेस्ट अपडेट जो भी होता है यहाँ पर आता है. अभी आपके लिए जरूरत नहीं है. मॉक टेस्ट हम जाएंगे, डाउनलोड फॉर्म्स, मेंबरशिप डायरेक्टरी, केस स्टडीज अभी जरूरत नहीं है. ई लाइब्रेरी, देन ई एकेडमी, देन ग्रीवेंस गैलरी. FAQ फॉर रजिस्ट्रेशन एज वैल्यूअर्स, ये आपके लिए बहुत जरूरी है. इसको जरूर आप स्टडी करिए, बहुत जरूरी है. FAQ आपके मैक्सिमम जो डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे. ये बायलॉज एंड पॉलिसीज ऑफ द RBO, आप जिस RBO में हैं उसके ये बायलॉज एंड पॉलिसीज हैं, इसको जरूर स्टडी करिए. आप जिस एनवायरनमेंट में या जिस इकोसिस्टम में हैं उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. देन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स, ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एक अभी हम चैप्टर इसके बाद में अभी एक और इसका लेंगे, आगे सिलेबस में है. गवर्निंग बोर्ड एंड कमिटीज, अपने कमेटी और गवर्निंग बोर्ड के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं. देन important circulars of IBBI, important IBBI orders, important government circulars, international valuation standards and syllabus. यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे important circulars of IBBI. ये आपका जो ग्रंथ है वो यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, कंपनी रजिस्टर्ड वैल्यूएशन एंड वैल्यूएशन रूल्स, रजिस्टर्ड वैल्यूज. ये आपने इसको क्लिक करना है. ये देखिए ये ऑलमोस्ट 70 पेजेस का है. अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो ये देखिए, दिस इज द बुक. मैंने बाइंड करा कर रखी हुई है. जब मेरा एग्जाम में मैं अपीयर कर रहा था तब मैंने ये बाइंड कराई थी. अगर आपको विजिबल हो रही हो तो इस तरह की बाइंड कराकर इसको रख लीजिए. ये लाइफ टाइम आपके काम आने वाली है फॉर एग्जामिनेशन एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑल्सो. ओके, इसके अलावा इसके ऊपर जितने अमेंडमेंट्स आए हुए हैं वो सब यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे एक ही जगह पर. कहाँ पर जाना है मैं आपको दोबारा बताता हूँ. वापस चलेंगे.
सीवी इंडिया में जाएंगे, सीवी इंडिया से सीवीआईएफ में जाएंगे, वहां पर भी ये चीज अवेलेबल है, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। रेगुलेशंस में जाएंगे, इंपॉर्टेंट आईबीबीआई सर्कुलर्स ऑफ आईबीबीआई। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017। ये हमारे लिए एक धार्मिक ग्रंथ की तरह होना चाहिए एज अ वैल्यूअर। ये आपके लिए बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी में से ही आपको एग्जामिनेशन भी आएगा, और उस एग्जामिनेशन में काफी सिलेबस में काफी पार्ट है, और डे टू डे लाइफ में और आगे पीयर रिव्यू में, और आपको जब काम करेंगे तो आपको काफी सर और एक इसमें बार नजर क्लिक आएगा। करिए कंपनी, इसमें एक बार क्लिक करिए सर, कौन सा पीडीएफ डाउनलोड करें? कंपनी रजिस्टर्ड वैल्यूएशन एंड वैल्यूएशन रूल्स, इसको क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर, भारत का राजपत्र, ये दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल है, एक सिर्फ इंग्लिश में यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद इसमें जो अमेंडमेंट आए हैं, कुछ क्वालिफिकेशन बाद में ऐड की गई है, वो यहाँ पर ये अमेंडमेंट यहाँ पर पड़े हुए हैं इसके, ये दोनों तीनों, ये तीनों इनमें डेटा एक एक दो दो पेज के, इसमें इसको भी प्रिंट करके आप पीछे लगा सकते हैं। ये सिर्फ इंग्लिश में है। दिस इज लास्ट फोर्थ फिफ्थ सिक्स फोल्डर आपको सिर्फ इंग्लिश में है, और बाकी के दोनों फोर्थ एंड फिफ्थ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप अपने लैपटॉप की कैपेसिटी के हिसाब से दोनों में से कोई भी एक डाउनलोड कर सकते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं। कुछ आईओएस और एंड्रॉयड की वजह से दोनों चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दी गई हैं। आप फोन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इवन आपको डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं, आप सिंपल क्लिक करके इसको रीड कर सकते हैं। लेकिन ये मैं रिकमेंड करूंगा आप डाउनलोड जरूर करिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम यूज होने वाली आपकी बुक है एज अ वैल्यू। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर जो भी सर्कुलर है, एआईसीटी का नोटिफिकेशन है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। आप अपनी एजुकेशन यहाँ से मैच कर सकते हैं। ये गजट भी एआईसीटी की तरफ से जो अवेलेबल है वो यहाँ पर पेस्ट किया गया। सर दोनों ही तो हिंदी में दिखा रहा है सर। सर उसको आगे इंग्लिश में आ जाए, उसको थोड़ा क्लिक आगे करिए। अभी मत करिए, अभी मत करिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। या बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द क्लास, जब भी ब्रेक होगी। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए, बुलेट पॉइंट्स लिख लीजिए, और तरीका लिख लीजिए कैसे आप पहुंच सकते हैं वहां। ये आईबीबीआई के सर्कुलर्स हैं ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर, जो मैं आपको बता रहा हूँ सुबह से प्रोटोकॉल्स, वो यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप इसको स्टडी कर सकते हैं। आईबीबीआई ऑनलाइन डिलीवरी, ये है एजुकेशन कोर्स के बारे में अमेंडेड गाइडलाइंस। ओके, देन अदर इंपॉर्टेंट, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो आपके लिए हम जरूरी समझते थे, वो यहाँ पर आपको एक कंसोलिडेटेड एक जगह डाल दिए गए हैं। प्री पैक्ड ये आपके लिए अभी जरूरी नहीं है, ये एमएसएमई पर्पस के लिए है, यहाँ पर जरूरी नहीं। अभी अभी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये और ये दो जरूरी है, इसके अलावा कोई जरूरी नहीं। एजुकेशन आपको यहाँ पर हम दे ही रहे हैं, वो आपको प्रोटोकॉल आप सारे फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ तक आपको जाने की जरूरत नहीं। ओके, देन बहुत ही यूजर फ्रेंडली साइट है। आप कहीं से भी किसी भी तरह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक साइट याद रखनी, CEVnews.in, उसके अलावा कहीं नहीं जाना। वहीं से ही आप सभी जगह जा सकते हैं। ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया, लेकिन ये सभी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल है। मैं आपको वापस पहुंचाता हूँ। दिस इज द मेन साइट। हम वापस अपनी जगह पर आ गए जहां से चले थे। देन ई लाइब्रेरी, आपने ई लाइब्रेरी को क्लिक करना है। दिस इज द एसेट ऑफ CEV मेंबर्स ओनली, नो इंट्रूडर इज अलाउड टू एंटर इन दिस फील्ड। क्लिक हियर टू ओपन। ये देखिए, जैसे ही आप ई लाइब्रेरी को क्लिक करेंगे, इस तरह का आपको पेज नजर आएगा। यहाँ पर आपने आइदर यहाँ पर ब्लू लाइन के ऊपर या फिर क्लिक हियर, यहाँ पर कहीं भी क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा इस तरह का। एक मिनट, मैं आपको साइन आउट होकर दोबारा से दिखाता हूं। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको मेल से ये आपसे एसएस मांगेगा। मेल में लेटेड भी आपके पास कोई भी मेल आपके पास है, लेटेड भी ये है। आप इसको क्लिक करेंगे, देन आपको इसको क्लिक करेंगे, देन यहां पर ये आपको एसएस मांगेगा। यहां पर आपने क्या करना है,
ये आपने लैपटॉप से, पहली बार आपने लैपटॉप से एसेस करना है। अगर आपने फोन से किया तो ये विंडो आपको नहीं नजर आएगी। लैपटॉप या डेस्कटॉप से फर्स्ट टाइम आपने एसेस करना है। यहां पर आपने सबसे पहले आपने लिखना है अपना नाम, ओके। इसके बाद आपने एंटर करना है, यहां पर अपना मेंबरशिप नंबर लिखना है। मेंबरशिप नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है, वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको एक लिस्ट शेयर की गई है उसमें अवेलेबल है, अदरवाइज यहाँ पर डायरेक्टरीज है, डायरेक्टरीज में आपका नंबर मिल जाएगा, मेंबरशिप नंबर। अदरवाइज आप फेसबुक पेज की हेल्प ले सकते हैं, जितने भी नए मेंबर्स हैं उनका वहां पर मेंबरशिप नंबर लिखा हुआ है। लेट इट बी आपका मेंबरशिप नंबर है CEV/SM/ let it be 4567 5678 something /B tech। जो भी आपको मिला है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए और रिक्वेस्ट एसेस कर दीजिए। बस इतना करके आप छोड़ दीजिए। ओके, ये विद इन 5 मिनट्स अगर आपका नंबर और सारी चीजें ठीक हैं तो यहाँ पर आपको एसेस मिल जाएगा ऑटोमेटिक। So, friends, visible है आपको स्क्रीन? Yes, sir. Visible है sir. Okay. Purpose So of our valuation. next topic is purpose of valuation. As you all know, the valuation of an asset depends upon its purpose. The entire process of valuation and of course the value of the property will change with the change of purpose of valuation. So we will discuss this topic's purpose of valuation. So in general, the purpose of valuation for buildings or other engineering structures, plant and machinery, valuation is done for the following purpose. First, we will discuss general terms, then we will discuss them one by one. First one is for purchasing an investment, then purchasing for self-occupation, revision of capitals, interim reports of execution of building and or other structures, compensation for land acquisition, present value of old properties, arbitration, assessing property tax, income tax, wealth tax, gift tax, capital gains, selling, mortgaging, then for collateral security auctioning, insurance, court fee stamp, partition stamp duty, rent fixation, etc. These are some of the purposes of valuation. So all the above purposes of valuation has been divided into 6 major categories. Each category is discussed in detail now. First is taxation, then finance, third one is industrialist purposes, then statute, then personal planning, and the last one is social responsibilities. So for taxation purposes, you know, those who are registered with CBDT, they do valuation for capital gain purposes. Sometimes you have to calculate the value of the property as on 1st April 2001 or 1st April 1981, as is the case in a case of capital gain purpose. Or sometimes you have to calculate the cost of construction. Whenever a client received an notice from the income tax authorities that he has spent so much amount on the construction, and you have to defend that client. In that case, you have to calculate the cost of construction of the building. So in such cases,
valuation is done for taxation purposes. So we will discuss it them in one by one. One is income tax purpose. So this is what we have already discussed, that whenever you have to calculate cost of construction to show that the amount of money spent upon the construction and to defend your client, you have to do valuation for income tax purposes. Then wealth tax of course has been abolished by the government. So it hardly any valuation is done under Wealth Tax Act from the year 1993 to 94. This tax has been abolished. Of course, wealth tax has been abolished, but Wealth Tax Act is still valid. The registration of registration which is done by CBDT, it is done under Wealth Tax Act, and valuers are registered under this act. So you must be clear in your mind that though wealth tax has been abolished, but still Wealth Tax Act is there. It has not been abolished. When is gift tax? So to avoid wrong computation of gifts made, it is desirable to have a valuer's report. It would help to avoid payment of excess tax, penalties and prosecution. This is very important. Whenever movable, immovable properties are transferred to relatives, and it is likely to attract provisions of deemed gift. So in case property is gifted, and if it is liable to pay gift tax, you have to do valuation under gift tax, so that the tax is deposited as per the value of the property, so as to avoid payment of excess tax, penalties and prosecution. Then of course capital gain purposes. So for capital gain purposes, you have to do valuation under capital gain whenever a properties or immovable property sold by a person, he has to pay capital gain. So in this we will discuss in detail when we will do case studies based upon capital gain. So as a valuer, you may have to do valuation under capital gain tax. This we will discuss in detail. Then for partnership dissolution. So let us suppose an industry is being run by two partners, and say at a time they decided to dissolute their partnership so as to divide the property among them. You have to do the valuation of the property for this purpose. This is partnership dissolution. Rent vis-a-vis depreciation. Sometimes the land is given on rent. So here we will discuss in the coming lectures that depreciation is not applied on the land. So depreciation is, let us suppose you buy a car today. After 1 year, its value will decrease because of depreciation. Similarly, the value of machinery, similarly the value of the building reduces due to depreciation. But remember, whenever you do valuation for a building, the depreciation part is applied only on the construction part. So sometimes construction part is also called improvements. So depreciation is applied on the improvement parts only. So you may have to do valuation in that case. If you are doing valuation for land,
So no depreciation is applied there. So we will discuss this depreciation part when we will be discussing cost approach to valuation. Then seizure of jewelry. So sometimes income tax authorities seize the jewelry because of non-payment of taxes. So this comes under the preview of valuers who are registered for as a gold valuer. So CEV has been conducting training part with the MSME Agra for training in gold valuation. So in the evening part, Sandeep ji will discuss with you how to become a registered gold valuer, along with, of course, your other category which you have been doing valuation, maybe for land and building, maybe for plant and machinery. Along with them, that you can become a registered gold valuer. The procedure will be explained by Sandeep ji. Then reassessment unjustified. Under the provision of reassessment in income tax law, a residential house was purchased along with the return of income tax. A values report was enclosed. After some time during investigation in some other case, it was felt that reassessment is necessary because probable agreement value was not based on fair market value. So let us suppose a client has purchased a house and he has submitted a valuation report from the value. But after some time, in another case, in related to his income tax queries, the same case was reopened again, and it was decided to reassess the property because it was felt that the valuation of the property submitted at that time was not fair market value. So you may have to do reassess the valuation of that asset. Then transfer of property. So these provisions are basically hardly followed, but in the metro cities, if you are buying properties above 10 lakhs together with plant, machinery, furniture, fixtures, or other things, then it is obligated to transfer and transferee to obtain permission under section 269 of Income Tax Act. Before buying or before selling a property having value more than 10 lakh, both the owner, the seller, and the buyer has to obtain permission from the income tax authorities. Now these provisions are not being followed mostly, and for that you may have to do valuation in case of transfer of property. So next is finance. So for purchase, sale, takeover, or merger. So whenever you are purchasing or selling or going in for amalgamation or taking over a company, so you may need finance for many purposes, such as for construction of your house, for improving your assets, for you improving your plants and machinery, for buying or selling any asset, or for the big companies take over similar or smaller companies, that is called amalgamation, or take over companies, they need finance. So for that, you may have to do valuation for the assets. It may be for land and building part, or it may be for plant and machinery portion, as the case may be. Similarly, for you can get term loan and cash credit facilities
for if you have to take term loan or cash credit facility from the bank, you have to do valuation of the assets. So this comes under the heading of valuation for term loan and cash credit facility. Then bank guarantee. So sometimes persons have to present bank guarantees. Let us suppose a contractor is taking has built a tender for some work, then he has to present some bank surety, to present some surety in the form of bank guarantee. So for maybe that he does not have enough cash in his bank account, so he may have to take a loan from the bank in the form of bank guarantee, and you may have to do valuation of his assets. So this is what is called bank guarantee. Then window dressing. So let us suppose a company has been running for the last 10 years. They have purchased their assets about 10 years ago. In the meantime, all you know, you will be we will be discussing this all this in our book accounts portion, that companies whatever they buy, that is their book value, and every year depreciation is applied to that value. The purchased amount is entered in the account books, and that value is called historic value. And every year some depreciation is applied, and that value goes on reducing. That value is called book value of the asset. Let us suppose a company has bought an asset for rupees 10 crore. That is about 10 years back. That is its historic value is 10 crore. Then in the 9th year, the value is, which was 10 crore, it becomes, let us suppose, 9 crore. And then in the next year, it becomes 8 crore due to depreciation. So this way, this value has been going on decreasing. This is called book value. Now let us suppose the company has to present itself in the international market for amalgamation with other companies. Then company may reassess their assets. The value of the asset, which was about 10 crore 10 years ago, may have become 20 crores now. If we do not take depreciation is other thing. Otherwise, due to inflation, the values of the assets might have changed. They have become 20 crore instead of 10 crore. Means you reevaluate all the assets in the present form to present their case in the international market or national market for to showing their assets to the other companies. So this is called window dressing basically. So you may have to do valuation. In that case, that will be called, the purpose of the valuation will be window dressing. Then devaluation of rupees. Sometimes government devaluate rupees with the decrease in the value of the rupees in comparison with the foreign currency. Mostly in case of plant and machinery. The machineries which have been bought from abroad, if the rupees devaluate as compared to foreign currency, say dollar or pound, the value of the assets will change automatically. So in that case, you may have to do re-evaluation of the assets in case there is devaluation of rupees.
then advance against work contract. So in some tenders floated by government department, public undertaking, advance is given to the contractor, and he is expected to deploy some machinery for execution of said work. For claiming such advances, evaluation report is solicited. In fact, machinery deployed need not to be new. Advance is also given against deployment of old machinery. However, quantum of advance may be different for procurement of new machinery and deployment of old machinery. So let us suppose that a contractor has got a contract to do some work, but he needs advance from the government to carry out the work. So what he has a lot of equipment, a lot of machineries which he has been deploying on the work. Against that machinery, he may get advance from the government. So what is the value of that machinery? So you may have to do, our plant and machinery expert values may have to do valuation of that machinery to get advance from the government. Of course, there will be difference. If the machinery is new one, then the government or the department may take the value of the new machinery as it was purchased, or if the machinery is an old one, then of course they need your services. Then for incentives, while shifting an industry to the backward area or no industry zone, certain percentage of old machinery is allowed to be shifted without loss of incentives. However, agencies who are offering these incentives have incorporated a condition that value of such machine should not exceed permissible percentage of total capital employed in the industry. In order to substantiate incentive claim, it is desirable to support it by valuers report. So basically what happens, let us suppose the government has given a plan to the industrialist to shift their property to some other place in an area where there is no industry, or the area which is a backward area declared by the government. So what happens in that case? So nobody will want to shift their ongoing projects or will establish their project in no industrial zone or backward use. Then the government give incentives to them to shift their machinery to the new site, which is a no industrial zone or a backward use. But the value of that machinery should not exceed a permissible percentage of this thing. You have to remember, permissible percentage of total capital employed by the industry. So you have to calculate the value of the property, machinery basically, so that it is within permissible limits as stipulated by the government department. Then security deposit for electric company. So sometime when a company is established and the owner has to apply for an electrical connection, but the owner has to deposit a large amount in the form of security. It may run into lakhs of rupees. So he may not be having the requisite amount with him. Then he may have to get loan from a
financial institution. For that, you may have to do valuation of the assets which are to be mortgaged to the financial institution. So you may need to do valuation of an assets so that the owner may get the requisite amount in the form of rupees which he can deposit with the electric company as a security. Then for industrialist may it is a similar case as we have already discussed, that in case of window, you may have to do valuation for window dressing. Similarly here, for industrialist, if he is going for some foreign collaboration, he may have to do window dressing of their assets. So in case of foreign collaboration, you may have to do valuation of basically it will be re-evaluation of the assets of the existing firm. Then for custom duty, whenever an industry buy machinery from a foreign country for its own use, he has to pay custom duty on the price of the machinery. So this machine may be an old machine in the foreign country, which is useful for a person in India. So if there is any problem with the customer department, that the customer department says that the value of this machine is say 10 lakh, and the client is saying that its value is 5 lakh, and he is ready to pay custom duty based upon 5 lakhs, then you as a plant and machinery value, you may have to evaluate that property to get its fair market value. And of course, then you have to defend your client. So this is what you have to do valuation for custom duty. Similarly, this octroi in most of the states, this octroi has been abolished. But in some areas, octroi is still being paid, especially in cantonment areas. This octroi has not been abolished. The person have to pay a certain amount to the local authorities while entering into their area. And of course, on the machinery, octroi is levied on the basis of value of the machine. And if anywhere if any doubt is there, or if any in case of any dispute between the authorities and the client about the value of the machinery, as a plant and machinery valuer, you may have to do the valuation of that machinery for paying right amount of octroi. Then auction. So of course, this is most important thing when you are going to become a registered valuer. You have to do valuation, mostly valuation of Companies Act, under Companies Act, and in most of the cases, the properties are going to be auctioned by the concerned authorities. And there you have to, in the coming lecture, you may be dealing with different types of values, maybe fair market value, then forced sale value, liquidation value, realizable value, market value. There are a number of types of values. So here you have to, in the case of auction, you have to do forced sale value or liquidation value. So for that you have to do valuation for auction purpose. So rent a machine. Similarly, as a building is given on rent, you may have to do valuation of to calculate the standard rent on the building. This you will be doing
how in the coming lectures how to calculate standard rent of a building whenever there is a dispute between client and the landlord, tenant and the landlord. You have to calculate standard rent. So standard rent is basically the rent which is calculated on the basis of some laws as stipulated by the concerned state department. So mostly it is calculated by the Public Works Department authorities, but in case of any dispute, you may have to do calculation of standard rent. Similarly, in case a machine is given on rent, so of course its rent will be based upon the value of the machinery. So whenever a person want to give his machine on rent to some other person, they may get evaluation of his machinery, their machinery, so that some rent is decided on the basis of value of the machinery. So whenever some property, whether it is machinery or it is a building, so but here the procedure will be somewhat different, which we will be discussing in the coming week, how to calculate standard rent of a property. Then for SSI registration, so under small scale industries registration, it is done for industries which are having machinery up to certain limit, maybe 50 lakhs, maybe 75 lakhs, and you have to do valuation of that machinery to substantiate the claim of the owner, so that he is able to get small scale industries registration act. He may get registration under SSI, small scale industries registration. So then again, when there is no bill, so in case of local manufacturers who manufacture their machines by taking different components from different sources, and then they manufacture or fabricate a machine, and then cost of technical know-how and the probable profit, if it is purchased from outside with various duties, is not included in the capital assets. So in that case, you may have to do valuation of such machines so as to incorporate them in the book of accounts. Then for adequate and timely insurance, this we will be discussing in the insurance part, that whenever you have to do insurance of an asset, maybe building, maybe plant and machinery, you may have to do valuation. Now, how the valuation of an asset is done for insurance purposes, which this we will discuss all in details when we will be doing case studies based on insurance. So how to do valuation for insurance, we will discuss in the coming case studies. So you may have to do valuation of assets for adequate and timely insurance. Then statute, under government rules, you may have to do valuation. First thing is stamp duty. So mostly the stamp duty is levied whenever a property is purchased, an immovable asset is purchased. But in certain states, revenue department has given authorization to the registered valuers to do valuation of the property, so that stamp duty is levied on that property. But in most of the cases, stamp duty is levied based upon the collector rates. Guideline rates are collector rates. But in some states, they have authorized registered valuers to do valuation of the property, so that based upon the valuation of the property, stamp duty is levied.
So for that purpose, you may have to do valuation. Then for land acquisition, when some land is acquired by the government department for its own use, for construction of roads, for construction of some project, compensation is paid to the owners. So based upon that, you may have to do valuation of the land whenever there is acquisition of land. This is called valuation under Land Acquisition Act. Then official liquidator. So as a No voice, sir. Sir, your voice is not coming. Coming, not audible. Sir, his video is also not coming. Please wait. There may be some internet connectivity problem. Please wait and have patience. He will rejoin within 5 minutes. Right, sir. due to some internet problem, the connection was disconnected. Then for personal planning, the first thing you must remember is that charity commissioner and registrar are cooperative society. Any charitable trust, whenever he is buying or selling capital goods, equipment, factory or property, they are required to solicit permission in advance, and for that purpose valuation reports are required. Then for personal planning through will, so let us suppose that the person want to divide his property among his successors. So to get its exact value or fair market value of the property, he may solicit your help and to have valuation report of the assets. Then of course for visa purposes, so for visa purposes, all of us has been doing valuation. The purpose is to stake sufficient, you have to show to the visa authority that you have sufficient stakes in the country, and to substantiate your claim by providing evidence of fair market value of the assets instead of book value. And then senior perks. So senior managers or directors of the companies are provided with furnished flats and including various gadgets with a view to give him an indirect benefit. However, these items cannot be given as it is to the retiring person, and as such a proper valuation report is obtained for debiting net value of these facilities from the amount of payable to the retiring person. So let us suppose that a company has given his employee a house which is fully furnished with a number of gadgets, maybe geyser and other perks. And when that person retires, company wants to transfer this asset to the retiree person and will deduct its amount from the amount they are going to pay on his retirement. So to calculate the value of these assets, it may be required to obtain your valuation report. Then of course for housing loan, when a person is buying a house, he need to have valuation from a registered valuer, from a panel valuer of the bank. So you may have to do valuation of that asset for housing loan purpose. Then for family settlement, family partition.
So whenever a property is to be divided among the different brothers, different sisters, or different persons, family persons, the valuation of that property is required so that it is properly distributed, divided among the different persons, different claimants of that property. Then for divorce settlement, this is mostly in foreign countries, even in India. So let us suppose there is some divorce case going in a court. The husband has some property, or husband has bought his property in the name of his wife, or there may be some other disputes. So for this divorce settlement, if a property is good and sufficient, it is invariably valued before divorce settlement is made. Then social responsibility. So as you all know that MPs in our countries are given MP-led fund of ₹5 crore every year. So let us suppose that a MP of your area has given 1 crore for the construction of a road in your area, and he may require your services to check whether ₹1 crore has been spent there or not. Similarly, it may be for the construction of a building in his area. So in that case, you may have to do valuation. This comes under the heading of valuation under social responsibilities. So these are certain purposes of valuation for which you may have to do valuation at one time or the other time. And of course, the value will differ with the change in the valuation purpose of valuation. It is very important for a valuer to know what is the purpose of valuation before starting his work on a particular asset. So if you have any doubt, we may discuss it here. So can I ask you a question now? Yes, sir. Can one asset be valued at two different values for the same purposes? Like if I have a property to sell, I hire a valuer A and I hire a valuer B, and both have given a substantially different value. What is the value? What is the authenticity of the valuation report? Sir, the valuation of no two valuer can give the same valuation. Absolutely. First thing you must remember. Second thing is that if both the valuers are giving fair market value, they have the knowledge of the market, they have done proper study, proper inquiries from the market, then their valuation should not differ by more than 10%. If their value differs by more than 10%, then one of them or both of them have given wrong valuation. Sir, Yes. what if a same property is valued for two different purposes and the valuation amount comes out to be drastically different, more than 10%? It will of course come drastically different. Of course, let us suppose you are doing valuation for a bank. For the bank, you will calculate the present market value of the property. But if you are doing valuation for capital gain purposes, you will do its valuation for 1st April 2001. So the value will be drastically different.
Hello, sir. So the problem is that in our country, most of the property is being sold. You will be uh, dealing with another aspect, black money aspect. So most of the black money is involved in sale and purchase of the properties. That's why this difference of valuation arise for same purpose, for same property. Two valuers are giving two different values because a lot of black money is involved. You cannot get exact land value. You cannot apply, and of course, not land value in building also. If you and when we were discussing case studies, let us suppose I am applying straight line method of depreciation, and the second valuer is applying constant percentage method for the same building. If the rate of construction is same, but the depreciation will become different. If the depreciated amount become different, the total value will definitely change. So there is no particular method given that you have to use straight line method, you have to do constant percentage method. And of course, if you use sinking fund method, in that case, the depreciation will be very less than these two methods. Which when you will be studying case study, you will see all these things. So let us suppose one person is taking unit rate of land 10,000 per square yard, and second one is taking 15,000 per square yard. Then one person is applying straight line methods, other person is applying sinking fund method. So there is no hard and fast rule that a particular valuation is to be done by particular method. A particular method of depreciation is applied to a particular asset. We all discuss same question with different type of depreciation, and you will see how much the difference will be there. So of course, if the work has been done properly by both the values, then the difference should not be more than 10% if they are applying the same method of depreciation. And of course, same method of valuation. Of course, there are different method of valuation. It is one is cost approach, other one is market approach, third one is income approach. So let us suppose for a rented property, you have to apply income approach. But if the A value done valuation with market cost approach and the B value does valuation with income approach, the value will be different. So there are a lot of things involved in it. So you have to check that both the valuers have applied the same method of depreciation. Of course, same method of valuation also. There are many things involved in it. You cannot say that both of them are wrong or one of them is wrong or another one is right. It is for you to check who is right and who is wrong. So, but the problem is that if both the valuers are submitting report in a bank personnel do not know who is wrong, who is right. For them, who is giving more value, he is right. So there are certain limitations in our field which we cannot ignore. We have to go with these limitations. We can't say that everything is perfect. In our valuation, every time 2 plus 2 is not 4. Sometimes it is 2 but 2 is 22 and 2 plus 2 is 5.
You will do it, learn in the coming weeks. You will check that there is lot of confusion in all these things. Theoretically, the value should, when you will study the theory, you will learn that value should reduce. But when you do it practically, the value will increase. There are certain methods. So it is very important for you to learn which method, which thing you have to apply where. And remember, every case is different from the other one. You cannot apply the same procedure, same things to two valuation, even if they are in the same area, in the same locality. This you will learn in the coming weeks. This is where you will learn how much difference is there. The only thing as of now, most of you may be knowing two things. One is land, other is building. And you are adding these values to calculate the total value. But now onward, you will learn that valuation is not all about land and building. There are many things involved with it. So as of now, you may be not satisfied with my answer, but at the end, when you will be completing this course of 50 hours, you will learn that whatever I am saying, it was correct. Any other doubt? Sir, Yes, sir. sir, you have used it in window dressing word. Yes. Can you explain me one second for that? I have small doubt. Let us say that a company was established about 10 years ago. He has spent, let us say, rupees 10 crore at that time. He purchased a building, he purchased a plant and machineries. He spent a lot of money on different components. Now, after 10 years, then there are three things. One thing is historic value. His historic value is 10 crore, which was 10 years ago. Then every year, he will be applying, their accounts department will be applying depreciation to their assets. Every year, its value will be decreasing. What it was 10 years ago, let us suppose it is 10 crore. In the next 9th year, it was, say 9 crore, then 8 crore, 7 crore. Every year, valuation of the property will be decreasing by applying the depreciation. That is called book value. And let us suppose that value which was 10 crore 10 years ago, now book value is, let us suppose, 5 crore. Now the company want to have some collaboration with the foreign industry. Now he want to show his assets. So basically what has happened? Due to inflation, the value of the asset which was 10 crore, the machine he has bought, let us suppose he has bought a machine for 1 crore. Now that machine in the market is being sold for 2 crore. That machine is available in the market for 2 crore. So what that owner will do? He will re-evaluate his asset based upon the present value of the assets. So basically, he is not buying anything. He is not selling anything. He is just refreshing his assets, re-evaluating his assets according to the present value of the machinery, present value of the different components, so as to show realistic value to the other person, other companies to whom he is going to collaborate, just to show his asset, not book value of the assets, present value of the assets, you can say. Instead of book values, he is going to show present value of the assets.
Of course, present depreciated value of assets. Sir, Hello, sir. hello. Sir, Yes. so in this particular example, suppose the person is having a plant and machinery, and after 10 years, his book will become 5 lakhs. At the same time, I suppose the land will also keep on increasing. Yes, sir. So there will be a trade of value somewhere. So, sir, everything, it is not only plant and machinery, every asset he has to reevaluate to the present value, by the present market value. Okay, present, but that won't be aggravated, means it might become depending upon the supplies. It might the machine which costed around 1 crore 10 years back, it might cost 10 crores nowadays after 10 years. So in that case, again, the 10 years old machine, because of wear and tear, will be its So production. that's what I am saying. You Huh. have to present net depreciated value, not present value of the property, depreciated value of the asset. Okay. This you will be dealing with when you will be doing case studies, how to calculate the depreciated value of an asset, not present value. Present value is something different. Depreciated value is something different. Mm. You have to calculate depreciated value, not present value of the asset. So the value always depreciates or it appreciates also sometimes? Sir, theoretically, it depreciate every year. Practically, it may appreciate. So this is where the problem is. That is what I am saying. Let us suppose you have bought a piece of land for 10 lakh and you have constructed a building over it for 20 lakh. And when you will be calculating sinking fund, you will assume that value of the building will remain 20 lakh after 50 years. Practically, it is not possible. But this is what theory says. You have to assume that value will remain constant. This is what we have, that is what I have told you, that in valuation 2 plus 2 is not 4. It may be 22. This is a problem. Of course, value of the land will appreciate. Value of the building will appreciate. That is different issue. But whenever you do, in most of the cases, it will be assumed that either the value remains constant or it depreciates. You will never expect it to appreciate. That is why we are doing this window dressing. In window dressing, this appreciation factor is taken into account. Otherwise, if practically it has been taken, we need not to do window dressing. That is why we need to have window dressing. Hello, sir. Yes, sir. Sir, in taxation, आपने penalties and prosecution करके एक दो word use किया था, उसके बारे में थोड़ा सा पता। In taxation इसमें penalties and prosecution करके दो words आपने use किया था, थोड़ा वो मुझे समझ में नहीं आया। सर ऐसे अगर मान लो मैंने किसी को गिफ्ट दिया है तो उसके ऊपर गिफ्ट टैक्स देना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि मैंने जो गिफ्ट दिया है वो 10 लाख का है। मैंने 10 लाख के ऊपर, मान लो एक प्लॉट है, प्लॉट मैंने सोचा 10 लाख है इसकी फेयर मार्केट वैल्यू, उसके ऊपर मैंने टैक्स पे कर। पर बाद में इनकम टैक्स वालों को पता चला, उन्होंने इंक्वायरी की, उन्होंने देखा नहीं इस पर लैंड की वैल्यू जो 10 लाख दिखा रहा हूं मैं, वो 10 नहीं है 15 लाख है। फेयर मार्केट वैल्यू जिस समय मैंने गिफ्ट किया था उस समय 10 लाख नहीं थी, 15 लाख थी। तो क्या होगा, मेरे को जो 10 लाख पे टैक्स दिया है वो तो दिया है, लेकिन अब 15 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, उसके साथ साथ मुझे पेनल्टी भी पड़ेगी।
कि जो 5 लाख पे कम टैक्स दिया उसके साथ टैक्स के साथ साथ मुझे पेनल्टी भी देनी पड़े। तो अगर मैं उसी समय किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन फेयर मार्केट वैल्यू लेके उसके हिसाब से मैं टैक्स पे किया होता प्रॉपर, तो मेरे को ये जरूरत ही नहीं पड़ती उस समय दूसरी बार मेरे को पेनल्टी देने की या एडिशनल टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज व्हाट दिस पेनल्टीज आर। Sir, यस सर। sir, in book value of plant, is land value is also included in book value or only machinery value? Yes, is sir. included? Land value is also included, but depreciation is not applied to the land value. It remains constant. So it means in book value, there may be two separate heads because in plant, so every year depreciation is counted as you said, sir. Yes, sir. So total book value will, in total book value, there will be sum of land value and sum of the depreciated, sum of the building part and depreciated value of the plant and machine. There will be three things involved. One is land, second one is building, third one is plant and machinery. Of course, there may be some other assets also. So depreciation will not apply to the land part. It will remain same, constant, basically. So basically, it does not remain constant practically. Practically, it will appreciate every year. But in case of book value, we assume that it remains constant. Sir, suppose if book value is 100 and 50 is of land and 50 is of machinery. So it means depreciation will be done only in that 50%. Yes, sir. Yes. Okay. So after some time, that 50 will be 5 rupees and that for land value, it is still 50. But Yes, book sir. say it will Yes, be sir. 55. Right, sir. Sir, Clear, sir. So one small query again. सर Is it- एक मिनट सर मैं रहना चाहूंगा। बजेतर सर, ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत टाइमली आपने क्वेश्चन पूछा है। कल अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का सब्जेक्ट होगा, उसमें ये बैलेंस शीट में कैसे इनकॉर्पोरेट होगा ये कल हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बारे में आप नोट करके रखिए, अगर कल कोई चीज मिस हो तो कल दोबारा से इस क्वेश्चन को दोबारा पूछ सकते Right, sir. हैं। यस सर, आलोक सर। Thank you. So thank you for letting me speak. Sir, मेरा ये प्रश्न था कि there are certain cases जहाँ पे कि land and building का जो architect या civil constructor है वो खुद ही valuer है या एक valuation professional है. Can somebody approach the person who has constructed the building for valuation because he is a registered valuer again? सर इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। वैल्यूएशन का सब्जेक्ट आएगा, उसका वैल्यूएशन की डेफिनेशन में ये सब आपको क्लियर होने वाला है। राजेंद्र सर ने ये सब्जेक्ट लेना है, कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे। 4th डे, आज फर्स्ट डे है, जब हमारा 4th डे होगा तो ये कॉमन सब्जेक्ट्स में आएगा। यहीं से क्लास शुरू होगी। वैल्यूएशन की डेफिनेशन एज पर IVS एंड एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो अभी तक बने नहीं हैं लेकिन कभी भी बनेंगे। इंडियन के हिसाब से हम क्या वैल्यूएशन की डेफिनेशन होगी, लेकिन IVS अभी फॉलो होगा तो उसमें एक एक वर्ड की आपको डेफिनेशन बताई जाएगी, पूरा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन होगा। Friends, this is about purposes of valuation. ये purposes of valuation land and building के लिए 4 मार्क्स का है और प्लांट एंड मशीनरी के लिए 6 मार्क्स का है। तो अभी डॉक्टर राजविंदर सर हमारे साथ हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रेज योर डाउट्स। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि गिफ्ट टैक्स कौन देता है, जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है कि जो गिफ्ट दे रहा है? जो गिफ्ट टैक्स जो है, जो जिसको दिया जा रहा है वो पे करेगा। तो ये हो सकता है कि जो गिफ्ट दे रहा है वो भी दे दे, वो डिपेंड करेगा, लेकिन गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए। तो बेसिकली लाइएबल जो है वो ले रहा है, जो ले रहा है उसको पे करना है। बट अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसके साथ कोई टैक्स भी दे रहा है तो गवर्नमेंट को कुछ लेना देना नहीं। सर एक आपने बताया था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें आपने बताया है कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होती है एज पर इनकम टैक्स बायलॉज 10 लाख के ऊपर उसकी वैल्यू है तो वो सर वो जो है एक एक्ट बना था उसमें जो मेट्रो सिटीज है उसमें
उसके लिए था कि 10 लाख से ऊपर की अगर कोई प्रॉपर्टी होगी तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी पहले कंसर्न्ड अथॉरिटी से अंडर सेक्शन 246। तो बेसिकली आजकल जो है 10 लाख कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रहा। जी बिल्कुल। तो इसलिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है दे आर नॉट टेकिंग एनी पेन, बट लॉ इज देयर, सो नो बट नो बॉडी इज फॉलोइंग दैट लॉ। बट मे बी समटाइम कि अगर गवर्नमेंट को 10 साल बाद याद आया भी जेतु की ये नहीं, जैसे होता ही हमारे इंडिया में। तो ये दिस इज बेसिकली फॉर मेट्रो सिटीज, नॉट फॉर ऑल द सिटीज। फ्रेंड, जैसा सर ने अभी आपको बताया, एक ही क्वेश्चन को हम लोग जब केस स्टडी होगा तीनों अप्रोचेस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ना ही किसी ने अभी तक इनिशिएटिव लिया है कि एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट डेप्रिसिएशन के मेथड से कैसे सॉल्व किया जाएगा और तीनों में क्या अंतर आने वाला है। ये हम मैथमेटिक्स और वैल्यूएशन के बाद जो हम केस स्टडी करेंगे उसमें ये सारा डिस्कस करेंगे। तो फिर आपको ये क्लियर, आपके जितने भी डाउट्स हैं कि हम लैंड बिल्डिंग से करें या इनकम अप्रोच से करें या मार्केट अप्रोच से करें, किस अप्रोच से क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको वहां पर क्लियर होंगी। और जैसा अभी मैडम ने क्वेश्चन पूछा था कि दो लोग अगर वैल्यू करें तो क्या दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों में किसकी गलती होगी, तो वो सारा आपको वहां पर क्लियर होने वाला है। और एज अ वैल्यूअर अगर आप कोई भी अप्रोच चूज करते हैं तो in case of any litigation, it is your duty to defend yourself and your approach used. आपने कौन सा अप्रोच इस्तेमाल किया है और वो क्यों किया है for the valuation, it is the most important evidence to be kept in record. अगर आप नॉर्मली अभी तक हमने क्या किया है, जैसा कि हम सभी लोग करते आ रहे हैं, कोई भी वैल्यू आई, वेदर वो आपकी लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लैंड है या प्लांट है, मशीनरी है या फिर एक फैक्ट्री बनी हुई है, सबको सीधा उठाते हैं, लैंड की वैल्यू निकालते हैं, लैंड को कैलकुलेट करते हैं, 2 × 2 = 4, लैंड का एरिया निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर दिया रेट के हिसाब से, बिल्डिंग का स्क्वायर फुट निकाला, उसको प्लस माइनस थोड़ा बहुत एडिशनल एसेसरीज जोड़ी, उसके बाद टोटल कर दिया, लैंड की वैल्यू और बिल्डिंग की वैल्यू दोनों को जोड़ दिया और खत्म, हमारा काम खत्म। वी आर द परफेक्ट वैल्यूअर्स। ओके, सिर्फ फीस लिया और अपना काम खत्म। अभी यहाँ से काम खत्म नहीं होता सर, अब यहाँ से काम शुरू होने वाला है। अब एक्ट आ गया है, अब हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। आ गया नहीं, आने वाला है, लेकिन कंट्रोल शुरू हो गया है। अभी तक ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास था, जैसा सर ने बताया 34 AB के अंडर ये सारा काम कर रहे थे, लेकिन अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर इसको डाल दिया गया है। और नया एक्ट वैल्यू ड्राफ्ट बिल 2020 जो अभी अंडर कंसिडरेशन इन द पार्लियामेंट है, हो सकता है कल पास हो जाए, हो सकता है आज रात को पास हो जाए, हो सकता है परसों ऑर्डिनेंस आ जाए या 2 साल ना आए, कुछ नहीं कहा जा सकता, इट इज वेरी अनसर्टेन। लेकिन जब भी आएगा उसमें आपकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा फिक्स होने वाली है और एज ऑन डेट भी आपकी लायबिलिटी फिक्स हो चुकी है, जो कि आपने वेरियस कोर्ट डिसीजंस में देख चुके हैं। यस सर, एनी अदर क्वेश्चन फॉर राजेंद्र सर? हेलो। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर से कि सपोज करिए किसी ने एक मशीन को परचेज किया और उन्होंने परचेज किया, उसको इंस्टॉल नहीं किया, अपने यहाँ उन्होंने रख लिया, ब्रांड न्यू में पैक रखा उनके पास। 3 साल बाद वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने किसी ने इंस्टॉल नहीं किया था तो उसको किसी को सेल कर रहे हैं। तो अब हम लोग जो वैल्यूएशन करेंगे तो उसमें क्या हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे? सर डेप्रिसिएशन जो है वो ऑफ कोर्स होगी। अच्छा ठीक है, क्या उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि हाउ मच इट हैज डेप्रिशिएटेड, व्हिच मेथड यू हैव टू अप्लाई। Yes. Maybe that percent, whenever you are doing depreciation, what you use? You assume percentage of depreciation every year. Right, sir. That percentage is dependent upon a number of things. That is wear and tear, age of the building, age of the part, whatever it may be. So, what will happen there? The percentage of depreciation will decrease. Of course, depreciation will be applied, but the percentage of depreciation will be decreased. Okay, thank you. दूसरा सर, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर आएगा, ये प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है। आई थिंक यू आर अ कैंडिडेट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एसेट क्लास। Right, sir. हाँ सर, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है। ये हम
एक्चुअली क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए मोस्टली हम लोग इनकम अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी के लिए कॉस्ट अप्रोच इस्तेमाल की जाएगी। उसमें जो जितनी देर इंस्टॉल नहीं की गई मशीनरी अंडर रनिंग कंडीशन नहीं है, उसके लिए कुछ अलग क्लॉजेज हैं, वो हम आपको प्लांट एंड मशीनरी का जब सब्जेक्ट 5th डे शुरू होगा, वो उसमें हम लोग आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे। राइट सर, थैंक यू। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? Any other question for Rajvinder sir? No, sir. Friends, अगर कोई डाउट रिगार्डिंग पर्पसेस ऑफ वैल्यूएशन? सर एक डाउट है। यस सर, सर मान लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कर रहे हैं सर, कोई हाउस रेजिडेंशियल हाउस है और वो टेनेंट है, मतलब रेंट पे है, तो उसको हम किस मेथड से उस पे करेंगे? Of course, income approach method will be applied. You will learn this method in the next week. We will be doing income approach method next week. So when whatever. जब हम बैंक पर्पस के लिए कर रहे हैं कोई भी वैल्यूएशन, वो इनकम अप्रोच से ही होगी? Yes sir, you will be applying income approach there. ठीक सर, थैंक यू। सर जो आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एक एग्जांपल दिया था कि जैसे हमारे एरिया का जो भी एमपी है वो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ फंड्स अलॉट करता है, तो क्या एज अ वैल्यूअर हमारी ड्यूटी है उनको ये सजेस्ट करना कि कितना फंड उस चीज के लिए लग सकता है? कि it is not our duty, but he may require our services. If he is asking, of course you will be getting paid for that. It is not our responsibility to do free of cost. Of course, you can. It is up to you whether you do it free of cost or you charge your fees from the MP. But you are not duty bound to do that valuation. You may decline that offer also. देखिए, जैसा सर ने अभी बताया, सबसे पहले वैल्यूएशन का सबसे पहला जो चैप्टर है, मैंने आपको आज सुबह भी बिफोर द लंच ब्रेक आपको एक छोटा सा टिप दिया था। द फर्स्ट लेसन यू हैव टू लर्न ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल लाइफ इज NO, ओनली 2 words, NO, नो। लर्न टू से नो इन योर प्रोफेशनल प्रैक्टिस। जब तक आप नो कहना नहीं सीखेंगे, जब तक आप एक रेपुटेड वैल्यूअर नहीं बन पाएंगे। कोई भी काम आएगा, आने दो। आज 4 काम आए, आज 4 काम करेंगे, कल को 40 काम आए, 40 करेंगे, किसी को ना नहीं करेंगे। तो इसके का साथ एक तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और एक आपकी रेपुटेशन घटती चली जाएगी। अरे यार उसके पास जाओ, कर देता है, कोई बात नहीं, जब मर्जी उसको अप्रोच करो, काम कर देता है। ठीक है, जब आप चूजी बनेंगे तब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और सबसे पहले आप नो कहना सीखिए। जहां भी आपको गलत लगे, सीधा बाहर निकलिए, एस्केप इमीडिएटली, कीप योरसेल्फ सेफ। नो, और नो के आगे ओ जितने लगाएंगे उतना अच्छा लगेगा। NO, नो ऐसा बोलिए उसको, नो नहीं बोलिए, नो। इको आना चाहिए आपके पास, रिवर्ट इको आना चाहिए। अगर इको आपको अभी सुनाई दिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 2-3 साल के बाद कोर्ट ने आपको इको सुनाया तो 120B सीधा अंदर। तो इसीलिए कोई भी, जहां भी आपको थोड़ा सा भी गड़बड़ लगे, और पॉलिटिकल हम लोग कहीं भी नहीं आपको कहेंगे इन्वॉल्व करिए, जैसा सर ने आपको बहुत अच्छा सजेशन दिया, यू आर फ्री टू वैल्यू और नॉट, क्योंकि यहाँ पर काफी पॉलिटिकल चीजें होती हैं। आज एक पार्टी का भाई साहब हैं, वो आज कुछ खर्चा करते हैं, करने के बाद वो बोलते हैं कि मेरा इतना खर्चा हुआ, आप वैल्यू दे दो। अब बोलेंगे यार MP है, मैं उससे पंगा क्यों लूँ या उससे लड़ाई झगड़ा क्यों करूँ। वो बोलता है 2 करोड़ रुपए, मैं भी 2 करोड़ देता हूँ। बोलता है कि कारपोरेशन को मैंने फंड दिया था, उसने 2 करोड़ खर्च किया है, आप इसकी फटाफट 2 करोड़ वैल्यू दे दो। आप खुश होंगे, यार MP का लाल बत्ती का गाड़ी आके रुका है, मुझे बोल रहा है आने के लिए, गाड़ी भी भेजा है, पैसा भी दे रहा है, और MP भी है, मेरी जान पहचान भी है, मैं 2 करोड़ दे देता हूँ। जैसी गवर्नमेंट हटेगी, दूसरा आदमी आएगा, वो बोलेगा भाई साहब 2 करोड़ खर्चा हुआ है, चलिए इसकी वैल्यू करेंगे। दूसरा वैल्यूअर, वो उस वक्त MP बदल चुके होंगे, वो दूसरे वैल्यूअर साहब आएंगे, वो बोलेंगे इसकी वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख। तो जोशी साहब ने अगर 2 करोड़ दिया है, तो जोशी साहब के लिए जो नया गवर्नमेंट है वो प्रॉब्लम करिएगा। अमरीक सर ने या बचितर सिंह जी ने अभी 1 करोड़ 50 लाख दिया है, तो ही विल बी ऑन द गुड बुक्स ऑफ दैट गवर्नमेंट।
लेकिन जोशी साहब जो पहली गवर्नमेंट के गुड बुक्स में थे, अब वो गवर्नमेंट नहीं। तो हो सकता है वो आपस में पर्सनल डिस्प्यूट के करके एक आपको बलि का बकरा या स्केप गोट आपको बनाना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, वैल्यूअर जो है सबसे गरीब आदमी है। तो आप ये गरीब आदमी सोच के चलिए, भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा सर, मेरा बहुत छोटा सा काम है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मेरे चाचा जी के लड़के के बेटे की शादी है, मुझे 4 दिन के लिए वहां जाना है। तो आप कोई ना कोई ऐसा बहाना मारिए कि 1 महीने तक मैं बिजी हूँ, या फिर मेरे को सर कल को मेरे को बीपी हाई होने वाला है, तो मेरी वाइफ ने बोला घर में रहो, बाहर नहीं निकलो। ओके, कोई भी प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं अपने लिए। तो मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ, सर मेरा पेट खराब है, मैं अभी 4-5 दिन बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो अगर आप उस वक्त बच गए तो आगे आने वाली कई बीमारियां आपके पास नहीं आई। तो ऐसा बहाना नो कहना सीखिए। जैसे ही आप नो कहना सीखेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। हमने आपको एक बुक प्रोवाइड की है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्टली एंड प्राइसलेस। देयर आर 2 वर्ड्स, दैट थिंग इज कॉस्टली, सेकंड थिंग इज दैट थिंग इज प्राइसलेस। ओके, कॉस्टली और प्राइसलेस में क्या फर्क है? एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन? सर कॉस्टली इज समथिंग जिसको हम पैसे अरेंज करके कहीं से खरीद सकते हैं, प्राइसलेस है जिसको हम चाहे हमारे पास जितना मर्जी पैसा हो उसको हम उससे नहीं खरीद सकते। यस यस, वेरी ट्रू, काफी हद तक आप करीब हैं। देखिए आपको एक बुक दी गई है, आई तो थिंक जो बाय नहीं कर सकते वही क्या? हमारे काफी मेंबर्स, यस ठीक है सर, आपकी बात भी ठीक है, काफी क्लोज हैं आप। हमने एक बुक आपको दी है, एक काफी हमारे मेंबर्स के पास पहुंच चुकी है, नहीं तो पहुंच जाएगी। अगर किसी के पास है तो मुझे दिखा पाएंगे, अगर किसी के पास अवेलेबल है इस वक्त, जो बुक देना। यस सर, जोशी साहब आपको बुक दिखा रहे हैं, रोहित जी के पास भी अवेलेबल है, आलोक जी के पास भी है, अरे वाह सबके पास है, मेरे पास भी है, ये देखिए सर ये प्राइसलेस है। हाँ हाँ, सर इसका आप पहला पेज खोलिए। आपने कहा था इसको अभी लॉक एंड की में रखना है, इसलिए हमने लॉक एंड की में रख दी। हाँ देखिए सर, पहला पेज खोलिए, पहला पेज खोलिए, डॉक्टर साहब की फोटो उसमें है। उसके बाद पेज नेक्स्ट, उसके नीचे देखिए सेकंड पेज जो है, उसके सबसे नीचे देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई कीमत नहीं। नेक्स्ट पेज पलटिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके नीचे लिखा है प्राइवेट सर्कुलेशन ओनली फॉर द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स एंड वैल्यूअर्स। उसके नीचे कॉपीराइट के सारे लिखे हुए हैं, इट इज द ओनली बुक अवेलेबल इन इंडिया पब्लिश्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस पर्पस। सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये हिम्मत की है पब्लिश करने की, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, किसी ने पब्लिश करने के, कॉपीराइट एडिशन किसी ने पब्लिश नहीं किया, सिर्फ ये पब्लिश हुआ। ओके, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये बुक नहीं है, और ये आपके पास है। ओके, और इसमें क्या है, ये बुक आपने खरीदी नहीं है, ये बुक आपने खरीदी नहीं है। दिस इज नॉट बीइंग परचेज्ड बाय यू, दिस इज अर्न्ड बाय यू। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड अर्न। ये आपने खरीदी नहीं है, ये आपने कमाई है। ओके, अगर ये बुक मार्केट में अवेलेबल होती तो ये कॉस्टली होती, लेकिन ये बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज प्राइसलेस। कोई भी आदमी कितना भी पैसा देना चाहे, ये बुक उसको नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे मेंबर्स के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, मर्सिडीज में भी कॉस्टली, पर ताजमहल इज प्राइसलेस। ओके, आज की डेट में मैं मारुति खरीद सकता हूं, मैं छोटा आदमी हूं, मेरे लिए जो मर्सिडीज है या ऑडी है बहुत महंगी कार है, बहुत कॉस्टली है। हो सकता है कल को मैं मेहनत करूं, डॉक्टर साहब मेरी सैलरी बढ़ा दें या कुछ गिफ्ट दे दें, तो हो सकता है मैं मर्सिडीज खरीद सकूं या मेरे लिए बेच दें, लेकिन ताजमहल मैं नहीं खरीद सकता कभी भी। मेरे पास जितना मर्जी पैसा आए, कुछ भी आए, मैं ताजमहल नहीं खरीद सकता, बेशक मैं पीएम या राष्ट्रपति कुछ भी बन जाए, लेकिन नहीं खरीद सकता। दैट इज प्राइसलेस। तो यही फर्क, एक अगर आप हर चीज एक्सेप्ट करेंगे, हर असाइनमेंट एक्सेप्ट करेंगे, तो आप के लिए एक रेपुटेशन धीरे 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 गिरती चली जाएगी। इकोनॉमिक्स में हम कल सुबह यही पढ़ने वाले, लेकिन अगर आप जैसे धीरे धीरे मना करना शुरू करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। नहीं यार, वो उसके पास गए तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ये काम, ये उसके पास नहीं लेके जाना। 2 फायदे होंगे, एक तो गलत काम आपसे दूर होने शुरू हो जाएंगे, तीसरा आपके पास
टाइम लिमिट बढ़ जाएगी आपको असाइनमेंट में पिवोट करने के लिए। आपके पास 15-20 असाइनमेंट की जगह 4 या 5 असाइनमेंट आप एक्सेप्ट करेंगे और उसमें ज्यादा डिवोट करेंगे, तो इन फ्यूचर और लाइफ में आपके पास लिटिगेशन होने वाले हैं 3 या 4 साल के बाद। आज कुछ भी नहीं पता चलेगा, अभी आपको नो की को नहीं सुनाई देगी, वो 4-5 साल बाद जब कहीं भी कोई एनपीए होगा या कोई डिस्प्यूट होगा या फ्रॉड होगा, जैसे अभी देखा आपने सीवी न्यूज में, आप देखिए हम लोग कोशिश करते हैं बिना किसी का नाम लिए वहां पर आपको एक केस स्टडी दिखाने का, कितने वैल्यूज के साथ क्या क्या हुआ और कितने बड़े बड़े एलिगेशन उनके ऊपर लगाए गए, और वो बलि का बकरा ही बनते हैं। लेकिन हमने बलि का बकरा नहीं बनना, दूसरे की गलती हमने अपने सर में नहीं उठा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो वहां पर हमने बचना है, और यही बचने के लिए हमने ना करना सीखना है। धीरे धीरे हम ना करते चले जाएंगे, और सभी लोग अगर हमारे एथिक्स को फॉलो करेंगे तो वैल्यूअर्स की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, और रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और डिग्निटी भी बढ़ेगी। तो यही एक कोशिश है गवर्नमेंट की ये करने की, क्योंकि अभी तक काफी, अभी आप कुछ भी करिए, एक डिप्लोमा वाला भी वैल्यूअर कर रहा है, एक छतरी लेकर रेलवे स्टेशन के बाहर बैठा वो भी वैल्यूएशन कर रहा है, एक तहसील के बाहर बैठा हुआ टाइप मशीन लेकर वो भी वैल्यूएशन कर रहा है, और एक आप एमटेक या बीआर किया सब कुछ करने के बाद 34A भी लेने के बाद आप कर रहे हैं, आप भी वैल्यूएशन कर रहे हैं। और एक रेपुटेड आदमी, एक एमबीबीएस डॉक्टर या एमएस सर्जन जो सर्जरी करता है, और एक छतरी लेके जो रेलवे स्टेशन के बाहर बैठा है, जो हथौड़ी लेकर बैठा है, ये दांत निकाल लो, आप हार्ट का ऑपरेशन करा लो, वो हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए तो आपका हार्ट तो खोल देगा, लेकिन वापस पैक करने के लिए आपको फिर से सर्जन के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए जब बाद में सर्जन के पास जाना ही है, क्यों ना पहले जाए। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तभी हम वैल्यूअर कहलाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू वैल्यू योरसेल्फ, योर ड्यूटीज, योर लायबिलिटीज, कल को क्या होने वाला। So any other question for Dr. Rajvinder sir regarding purposes of valuation? Then after that we will start our session. Not session, but guidance. Any other question? Okay. So we are ending this technical session.